Hello, welcome back to the stream. We are working on this big jam, a new jam, and this time the theme is sleep. So it was confusing, not confusing, I mean I was not able to decide what to do about this, but after seeing this guy and the bed, I thought, have you played hill climb racing? So yeah, think of that, and you're supposed to drive a van or something, and you will have a baby in the back, and you're supposed to drive such that the sleep of the baby is not disturbed, you know. So yeah, that's very simple concept, and I have not used box 2D yet, so I will be exploring this. And also I have not used, I tried to use LGTK last time, but I was not able to because it was kind of hard for me to imagine, and I think to use it. But yeah, I think I'll try using this time, because this 1-bit jam, the only information I need for a level is whether there is a collision or not. Okay, maybe I will have some backgrounds, so maybe I will need those also, but other than that, I need to lay out the ground and the vehicle. So I will be using box 2D for this, LDTK, and I think enlowmen JSON, this library to parse JSON and use it in my project, because LDTK file is just a JSON file, so I think I will probably use this, but we'll see. And I will be using C, so I think I will have to use C makefiles for this. So I'll create a new folder for BitJam. I'm starting a little late this time, but fine. And I think in Google I created a template, gamejam, raylib template, yes. Game. Okay, so let's try building this. Okay, we don't have makefile, so let's add that. I think I'll probably copy the makefile of skg probably. Yeah, let's use this. And I'm not sure what to call it yet, so we'll call it game. And yeah, that's it. Okay, this is C++. I will have to change this to C. I just want to yeah, I want to use C this time.
Okay, this also expects to have LDTK, which is okay. This already have all of the things that I want, so this is good. Okay, let's see. Yeah, I'll be back in a minute. It will take a while to compile, so. Okay, I'm back. I think, okay, there was some C++ code in here. We don't need that. This will become this. And we will not have this. Okay, we don't even need get FPS. We can just draw FPS in raylib. This should work. Okay, I need a shell. Oh. Okay, we have something, and so let's start with drawing is what I was planning. So I think I'll use these colors. I don't want to overthink this. The palette, I will just reuse what they have. It's a good palette, and I think it matches the game jam. So how do I get this? Maybe from the button filter. Okay, wait. Okay, I can take from here this. Okay, hold on. What was these values is what I want, because I think this raylib works on 255 stuff. Okay. Okay, this is the light color and this is the darker one. Whoever made this palette is good. Okay, this is light, this is dark.
Okay. Okay, hold on. Yeah. So let's start with this only. I can block this palette. Or maybe save this palette. Save. As sprite. And palette. How do you spell palette? Is this correct? And then load palette in this. Okay, nice. So let's start with this. It's a night, so I think I'll go with this. And this is the player's car. I'm on 32, so I think yeah. Okay, not bad. I think this should be fine. I mean, it looks like a car. And for tires, I can just do this. Or wait. Do this. So if it is if it is, what is it called? If it is driving, if it is getting driven, then it will look like this, which is not bad. I think I will probably move it around like this. Oh, it does it for both the frames. That's good. Okay. And we also have yeah, that looks good, I guess. Right? It looks like a car, and it looks like it is getting driven. I will. This looks like eyes. Maybe that's not a good idea to have windows in this car. Or maybe this. I mean, it's not the worst. It's not bad. Let's see in the animation.
I mean, it looks good. I'm fine with this. Yeah, we'll go with this. So this is our player, and and yeah, I will export this as a spreadsheet. Let's save this car and export this. Maybe I can crop it or not. I'm not sure. I think I made a very small one. I think this is fine. Yeah, okay, now that we have a car, let's try to add it in here. And we can start with a new repo. Yeah, so now first thing is to import this car and show it here. We will need this, not right now, but eventually, because we'll be setting the background. Okay, let's do that first then. So color. Okay, I'm supposed to add this. Okay, OBS is doing its thing again. It's not OBS's fault, it's my internet, but yeah. Okay, we have that background, which looks good. Let's store it in a variable. Dark color and light color. Oh, I think. Okay, got it. And let's use dark color. Okay, so let's also remove the FPS, we don't need it, and let's call this B1T Jam submission with jump 5 specifically. And we don't need this anymore. Okay, so now let's load the texture. And wait, why? Okay, got it. Frame is being called in here. I thought, who is calling frame? Because we are not using that callback stuff. This is not SDL. This is raylib. So
Mm. So wait, something's wrong. Hello. Okay, I'm back. Yeah, so we are supposed to load textures. I will do everything in header files. I mean, the implementation itself will also be in header files. I don't want to. Yeah, I don't want to make multiple files. Call it game state, I guess, or sir. Okay, call it game state. And static const, or no, static just game state equals game state. Okay, what do we need? What do we need in game state? The texture, or no, we will, let's make the gameplay file first. Gameplay dot h. Every file will be like this. Everything will be static in our case. And for this we will have this. Or do I need a reference? I can just use this static variable. This doesn't look right. Should it be like this? I don't know. So gameplay, it will have multiple levels. Okay, so since it is going to have multiple levels, I'll just create multiple level files. Instead of doing it smartly, I'm going to do this because yeah, I don't have a good big picture that I can lay out in here, so I will just do this. Okay, in a level we will need a texture. The question is, shall we load texture in each level or not? Or we can just use gameplay or maybe even game state to have to, get the texture and then render it. I think I can use gameplay for this. So text, let's import raylib. Textures duty, and
background. Okay, background is something that we will need all the time. So I can do it here. But putting it here, what I'm scared of is cyclic dependencies. If I import game state and gameplay and then again gameplay and game state, then it will suck. Okay, let's not do this. Let's everyone have their own textures. Background. Okay, we don't need background texture. Or we might. I'll draw things later, maybe buildings and all. Okay, let me think. We don't need background. Let's take player car texture. And this would be load texture from directly file lib. This is assets and this spreadsheet. And let's try draw texture. And yes, this is what we will need, source and destination and stuff. I might make change in the origin, we'll see, because our car was very in the bottom. Okay, so hold on, I will also need box 2D. We'll see how that will plan out. In this one is 32, so rectangle, source bound, okay, 0, 0, 32, 32. And let's keep both of these same for now. This can be 0, rotation 0. Okay, this should be in draw. Okay, I see. I think this should be play. Even this should be play, and then this should be play. Looks much better. And this will be in draw. Okay, let's try this in not in level. Okay, this is how it will look like, but in it we will do init gameplay. And then in draw we'll do okay, that didn't work. Oh, because I'm not loading the assets.
But it's showing texture loaded successfully. What? What? Okay, let's try a debug draw call. Okay, so this is happening, but this texture pro did not work. Is my coordinates incorrect? That does not. Look incorrect. Yeah, it is 32, so it should have worked, but it's not. Source and destination can be. Oh, maybe. No, I am doing begin drawing. So. Oh, my bad. And it is not happening. Okay, nice. We have a car. It's very small, but it's there. We can scale it up. Do we have vector transform? No. Scale. No, actually rectangle scale. Okay, there is no such thing. Okay, let's just do it manually. Or wait, I should just reduce the window size. What should be the size of my game? This is a tough one. I think 32 was very small for a player. Maybe 512. Maybe this. I don't think this is small letter. What was there before? Oh shit. Hold on. So maybe 256. Then it will become 504. And this will become 256. Okay, it's still not big. I think it will get bigger. No. Nah, I don't think it's working.
Okay, there was one scaling solution I did in, I think this is the one in which I did the scaling solution. Yeah, the aspect ratios here. I think I can use the shell. And yeah, it looks good. I think I can even reduce it to even 128. This might be too small, or no, I think this is good. Okay, the only thing I need to do is this. I need to set that to nearest pixel, the scaling or something, whatever that is. And for that, previously I was using viewport thingy. I can do it again. Game state. Okay, this bit will be 252 and 128. And we will be doing our rendering in that one. And I'll take the scaling code from here. Does this even have that scaling code or not? I am not sure. I think that happens when I draw this. Wet viewport. Stab. Who is stab? Oh, hold on. Okay, this works. And then end texture mode. And then begin and end drawing again. And draw texture. This will be viewport dot texture, or we can store it here.
position. Wait, Yash is calling. Just a minute. Hello? Oh, है? हेलो हाँ, क्या कर रहा है बे? लाइव? तो कॉल कैसे उठा लिया? क्या बस दिख गया तो उठा लिया. What? Like मैं तो मैं तेरे को कॉल चालू करता हूँ और ये क्या है बे? इसमें मेरी स्ट्रीम लिस्टेड है. क्या बात कर रहा है? क्या बात? कौन है ये? स्ट्रीम का सेंटर. Oh my god, okay, nice. Oh my god. Oh my god, who is streaming which submission and when upcoming streams are listed first? एक मिनट. जो तूने डाला? नहीं, मैंने बस बताया था Oh नहीं, ये शेड्यूल्ड क्यों है? क्योंकि उसमें टाइम देखना 7:30 को मैं करूँगा. एक मिनट, कब का शेड्यूल है? 1 अगस्त. आज तो 7:30 मैं 1:30 समझा. नहीं, अभी दूसरी स्ट्रीम चल रही है. क्या बोल रहा है? अभी की स्ट्रीम दूसरी है. ओ अभी भी स्ट्रीम कर. ओ भाई क्या कंफ्यूजन कर रहा था मेरे को. मतलब मैं नाइस. मैंने उठा लिया तो मुझे लगा लाइक मतलब मैं यहाँ कॉल करके फिर स्ट्रीम पे जाता हूँ तेरे वहाँ, फिर चिल्लाता हूँ डिस्कॉर्ड. समझा? हाँ वहाँ पे अरे तू 200% नहीं. हाँ अब बोल. हेलो. हेलो. आप ठीक है? ओके तो मतलब हाँ देख मैं तुरंत ही उठा लिया एक ही बार में. हाँ, इतना तुरंत नहीं था. मैं बोला ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है यार तू? अच्छा मेरे साथ है. नहीं करना जो चाहिए बंदा था. इतना बुरा ट्रीट करता तो इतना अच्छा ट्रीट क्यों कर रहा है भाई? बुरा तो नहीं करता था. इस क्या चल रहा है भाई? मेकिंग अ स्लीपिंग गेम B1T Jam भाई. B1T क्या है भाई? 1 बिट. लेट मी सर्च B1T. तो 1 बिट लिखो ना. हाँ, उसका जो नाम था वो एग्जैक्ट मैंने लिख दिया. है मस्त बनाया है इन लोगों ने. हम्म. Ten-day long game development join where you make a game using only 2 colors. अच्छा ये 2 ही कलर यूज़ कर सकता है तू? ये मतलब इसी में जो पेज का है ये बस? नहीं, कोई भी 2 कलर बस. ओह अच्छा अच्छा. नाइस. सो विच कलर हैव यू थॉट? वही जो पेज का है. हराम है. कमीने. क्या? बुरा मतलब ऐसे ऐसे बातें तो ऐसी बड़ी बड़ी करता है जैसे क्या? कि मतलब क्या ही कुछ तो अलग कलर सोचा होगा. हाँ भाई कुछ कॉम्बिनेशन बढ़िया सोचा होगा. हाँ कि वो मतलब कुछ तो बढ़िया लाइक क्या तो लाइक कौन सा सोचा? यही जो पेज का है ना भाई. तो यही तो मैंने बोला कि मतलब अच्छा मतलब हम पेज के अलावा यूज़ कर सकते कोई भी कलर मतलब? हाँ, कर सकते हैं. तो तू क्यों पेज का कर रहा भाई? बस ओवर थिंक नहीं करना था मुझे इसमें. वो तो कलर तो कभी भी चेंज कर दिया. 2 ही कलर है तो स्टार्टिंग पहले गेम प्ले हो जाए फिर तुम बाद में भी कलर चेंज कर दो. वो और शेडर्स है जो
जस्ट नियॉन हाई थी वो, पता है ब्लैक एंड वाइट गेम थी, उसके ऊपर शेडर डाल दिया, वो पिंकिश एंड वो हो गया। ओह अच्छा, पहले ब्लैक एंड व्हाइट बनाया था नियोन आई को। हाँ तो वो शेडर को ट्विक करते करते वो पिंकिश हो गया। डैम, नाइस ब्रो, नाइस। हाँ, अभी लाइक तेरा चैनल चैनल लगता है। हम्म। अरे भाई, ये तू गलत किया है ऐसे। क्या? ऐसे लोगो ऐसा डाला है कि मैं मार्शमेलो के चैनल में आ गया, अभी गाने सुनने को रहता है फिर मेरे को। अरे कंफ्यूज हो जाता हूँ, साला मार्शमेलो कौन है और संगीत मनफोत्री कौन है। हाँ। प्लीज गिर गया क्या? नहीं, बॉटल से पानी पिया। पानी पिया? ऐसा लगता है बॉटल को मारा तूने। नहीं। लाइक मैं ये बोल रहा था कि मार्शमेलो ये देखेगा ना तो वो गुस्से में भाई गाना छोड़ देगा और कोडिंग चालू कर देगा। नहीं। लिटरली मार्शमेलो ये वो क्रॉस क्रॉस और स्माइली। नो। आई थिंक ये मैंने कहीं और भी देखा है। वैसे क्या मतलब थीम तो स्लीप है, बट क्या सोचा है तूने कैसा बनाने का, मतलब कुछ आइडिया? तो गेम प्ले में ही देख लेना। भाई ऐसा तो रफली मतलब ऐसे हिंट दो, कुछ दो यार। है इधर फैन लोग आए ले, मतलब ऐसे में तुम ट्रीट करते हैं बुरा यार है। हाँ तो रॉन्ग स्ट्रीम। साले। वो कुछ कब से कर रहा है भाई स्ट्रीम? कितना घंटा हो गया? 2-3? नहीं, 50 मिनट। ओ साला 1 घंटा भी नहीं हुआ, बताओ। हाँ। क्या बेकार गैस था। वही। 1 घंटा भी बोल देता तो भी मैं गलत होता। हम्म। क्या 1 घंटा नहीं, 50 मिनट? साला 10 मिनट से हार गया। वही। ये लोग कौन है वे दूसरे? ये दूसरा स्ट्रीम ने 7:30 क्यों रखा है? मतलब 8 बजे खाना खाने जाने रहता ना। हाँ हाँ, बट ऐसे कंटिन्यूस ही रखना था तो। ओके ओके, हाँ हाँ। और ये लोग वही लोग ऐड करते हैं मतलब? या हाँ तूने तुझे कहीं बोलना पड़ता है कि ये है मेरा स्ट्रीम, ऐड करो ऐसा? हाँ, बोलना पड़ता है। नाइस यार। मैं ऐसे ही बस सर्च किया ना B1T Jam 5, तो तेरा स्ट्रीम आ रहा है, मतलब ऐसे सर्च में ही। और पुराने वीडियोस भी आ रहे हैं। वो तो देख रखा है इसलिए। डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत कम आता है सब कुछ। मतलब मतलब कोई गेम डेवलपमेंट वगैरह ये लाइक ऐसे, मतलब जो तू जो ये सब चीज़ें करता ना, ये काफ़ी नीश है ये सब चीज़ें। हाँ, मतलब काफ़ी लोग करते हैं, वो तेरी फीड में इसलिए नहीं आता क्योंकि देखता नहीं। मतलब कहना क्या चाहता है? क्या? क्या सही तो है, अब मतलब जो हम देखेंगे वो आएगा। वो जैसे भी तुझे है। लगेगा कि लोग लाइव स्ट्रीम नहीं देखते, लेकिन देखते हैं, मतलब जो देखता है उसकी फीड में आता है तो। हाँ, मैं तो भाई हंट पे निकालता हूँ। हम्म। शिकारी बन गया हूँ मैं। तो कैसी चल यू रही नो है हंटिंग? क्या? कैसी जा रही है हंटिंग? ठीक है हंटिंग, मतलब कोशिश कर रहा हूँ फिलहाल, है कोशिश जारी। हम्म। अभी भी खेलना है कुछ, बट क्या खेलूँ पता नहीं यार।
खेल देना गेम। यार पता नहीं, मैं पता है आजकल मतलब लाइव में व्यूज नहीं आ रहे यार इतने। तो वीडियोस अपलोड कर। रहने दे, लाइव ही सही है। नहीं नहीं, मतलब फिर लाइक स्टिल वीडियोस वगैरह भी अपलोड करना मुश्किल पड़ता है यार, बट हम्म। वैसे वो स्क्रिबल विद फ्रेंड्स, स्क्रिबल वाला पता है वीडियो, मतलब का वीडियो मतलब कल लाइव जो मैंने किया था, हाँ। तो उसका थंबनेल वगैरह चेंज किया, तुमने देखा था क्या? मतलब वो स्क्रिबल का होम पेज था वो देखा था। क्या स्क्रिबल का जो होम पेज काम वाला करना डाला तेरे को, था। बस देख डिस्कॉर्ड में बस भेज दिया, इसमें थंबनेल लिख जाएगा तुझे। ओह। सो व्हाट डू यू थिंक? पहले वाला सही था। ये इतना बढ़िया हो गया, इतना अट्रैक्टिव लग रहा है, देखने से लग रहा है कि मजा। अरे हाँ, मेन बात ही भूल गया भाई, मैं क्यों तेरे को कॉल किया था साले। क्या? अरे मतलब वो कैसे दिखता है डिस्कॉर्ड का ओवरले की कौन बात कर, वो दिखता ही नहीं यार मेरे में, क्या करने का। पता नहीं, पूरी स्क्रीन शेयर करनी पड़ती है शायद उसमें। ए चा ए भाई ए भाई ए हाय। क्या? मेरे अंदर का पागल कुत्ता जाग गया। लेकिन कैसे करते वो ओवरले, तू कुछ कुछ तो करता था। मैं तो फुल स्क्रीन ही शेयर करता था। ए ना रे भाई, फुल स्क्रीन तो मुश्किल है भाई, ऐसा नहीं कर सकता मैं। देख वो मतलब कैसे करने का पता नहीं यार, देख कुछ तो अक्ल थोड़ा। आ, इसको वो क्या है। बोलते हैं, डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड एक वो स्ट्रीम किट वाला है, स्ट्रीम किट डॉट डिस्कॉर्ड डॉट स्लैश ओवरले, उससे कर सकता है। स्ट्रीम किट। मैंने भेजा ऑलरेडी लिंक। हाँ में सही साले में इसी में ही था अभी। हम्म। इसी में ही था भाई। हाँ तो रहना था ना मतलब इसको क्या करने का? उसमें। फॉलो कर दे जो भी है। ओ हाँ, इंस्टॉल किया तो सीधा लाइक, नहीं यार बट इसमें आ रहा है रीड ऑल मैसेजेस और इंटरफेस विथ योर डिस्काउंट क्लाइंट। मुझे थोड़ा सस लग रहा है भाई। तो स्क्रीन शेयर ही। रहने दे रहे, सस चलेगा। नहीं क्या करना, नहीं रे तू विदाउट इन सब के करता था रे संकेत, कैसे? मैंने खुद का बनाया है वो तो। तो मेरे को भी दे यार, कि क्या क्या कर रहा है, पैसे मांगेगा क्या? नहीं मतलब तुझे करना पड़ेगा सेटअप, और उसमें भी वो जो एक्सेस कोड है वो यही वेबसाइट का यूज़ करता हूँ मैं। हाँ, मतलब तू चाहता ही है कि ये डाल के मुझे अपनी प्राइवेसी की लगा दूँ। नहीं मतलब, नहीं तो तू फुल स्क्रीन शेयर कर सकता है। इससे उसी बात पे आ गया यार, फिर प्राइवेसी की चिंता नहीं करता है यार। मतलब तू रख मत ना कुछ डेस्कटॉप पे। लैपटॉप उठा के कचरा पेटी में फेंक दे बोल रहा है मतलब। नहीं
यार इसमें हाँ, ये गेम ओवरले करके इसमें कुछ था क्या? गेम ओवरले करके देखी ना। हाँ मतलब मुझे इतना पता नहीं है, तो भी देख ले सर्च करके भी। ठीक है भाई, ठीक है। हम्म, ठीक है भाई, हाँ सही है फिर। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ सुन लिया ना। हाँ सुन लिया ना, सुन लिया ना। तू झगड़े पे आ गया। हाँ सुन लिया या, हाँ तो हाँ सुन लिया या, क्या क्या बिगाड़ लेगा, चल हट, हट, हट। हाँ, लेकिन जब मैं उसमें होता हूँ ना, जैसे अभी हम इसमें था ना, क्या नाम है इसका, ब्राउजर में स्क्रिबल खेल रहे थे, तब वो हम्म, ओवर आ ही नहीं रहा था मतलब। हाँ क्योंकि वो गेम नहीं है। हाँ तो, और इवन इसमें कहीं कुछ है भी नहीं ऐसा कि मैं वहाँ कर पाऊँ, तो क्या करने का। वही ये स्ट्रीम किट वाला ही करते हैं लोग तो। ये भाई, ये अच्छा तो है ना भाई। डिस्कॉर्ड का खुद का है अरे तो ऐसे बोलना है यार। क्या, उसमें discord.com लिखा है। अरे दे दिया, ऑथराइज हो गया। चल अभी क्या करने का। बस फॉलो कर दे। अब ओ, मैंने इंस्टॉल किया और यहाँ सब आ भी गया, मतलब वेबसाइट से सब सेटिंग करने का। हाँ और उससे लिंक जनरेट होगी, वो लिंक तुझे ब्राउज़र सोर्स बना के डाल देनी है। ओके ओके भाई, ओके ओके। ये सिलेक्ट सर्वर क्यों आ रहा है? हाँ क्योंकि तो जो वीसी में होगा उसका वो सर्वर और वीसी चैनल चूज़ करना होगा, ओके, तो उसका लिंक बनेगा। हाँ, ब्रा, मेक सेंस ब्रा, मेक सेंस ब्रा, मेक सेंस। या ये क्या है, डिस्प्ले ऑनलाइन अकाउंट, इनवाइट चैनल, इनवाइट चैनल। ये क्या है, इनवाइट चैनल क्या होता है? टेक्स्ट कॉलर, टेक्स्ट स्वाइज, स्वाइज। ओके, टेक्स्ट आउटलाइन, शैडोस है क्या मारने की। ओपेसिटी, ओपेसिटी क्या है? ओपेसिटी, मेक सेंस ब्रो, मेक सेंस। शैडो कलर, हट। शैडो का क्या करने का? ओह ओके, रुक 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 रुक। ओपेसिटी कम, शैडो ज़्यादा नहीं, शैडो ये था ना, बेकार बनाना है। फालतू चीज़ ये है। डिस्कॉर्ड का लोगो भी चेंज कर सकते हैं, नाइस। ये बढ़िया चीज़ बनाई है यार ये तो। मैंने उसी को ही रिवर्स इंजीनियर किया था। ओह माय गॉड, यूएफओ। मतलब वो करता है ना, क्या करता है? वो यूएसए, क्या? रिवर्स इंजीनियर यूएफओ को। अ, पता नहीं, मैंने तो नहीं सुना कभी। मैं तो नहीं समझ भाई, मैं नहीं समझ ना भाई ना। कौन यूएसए? वही
ये तेरा संकेत 143 हु अभी तक हटाया नहीं तूने। नहीं। इससे अच्छा संकेत 143 प्लेस अच्छा था भाई, क्यों सजा दे रहा है तू मेरे को। नहीं, अब यही देखना पड़ेगा। अरे भाई गलती हो गया, मान लिया, बुरा मान जाता भाई यार। इसमें एक मिनट, स्टेटस विजेट, चैट विजेट और वॉइस विजेट, तो मतलब कौन सा किसका सेटिंग करूँ, कहाँ? वॉइस वाला। अच्छा वॉइस वाला ऐसा। वही तुझे वॉइस दिखाना है तो वॉइस वाला। ओके बट यहाँ दिख नहीं रहा मतलब कुछ भी लाइक। हाँ, आई थिंक वो वॉइस चैनल्स में ही होता है, ये ऐसे वन ऑन तो वन मुझे कॉल्स जाना में। पड़ेगा उस वॉइस चैनल में अभी ऐसा। हाँ। हाँ हाँ, तो कोई नहीं, तू कर भाई अपना काम धंधा, मैं ये सब कर लेता। चल बाय बाय संकेत। बाय। So how do I do this? This nearest neighbor filtering for texture rendering. I don't see it. Maybe linear or something. No. Maybe pixel. No. Okay, how do I do this? Okay. Wait. Okay, let's see. No, it's still blurry. I think it's because of this window.
maybe this should work. But even after this, if I resize the canvas, no, it will have the same issue. हेलो। हाँ वो सेटिंग्स करना था इसलिए। साले क्या? मेरा नाम ही संकेत मनपुत्री हु करके ऐसा आया ना। सेटिंग्स करना था, एक यूज़र नहीं, मेरे से 2 यूज़र चाहिए था। मैं देख रहा था कि क्या कैसे हो रहा है। मेरा बंद क्यों नहीं हो रहा? एक मिनट, टेस्टिंग टेस्टिंग। बट तेरा बबल बंद ही नहीं हो रहा, ग्रीन कलर का ऐसा ही अटका है। हाँ, क्योंकि मैंने वो अभी ओ हाँ अब बंद हो जा रहा है। मैंने वो ये वाला अच्छा लग रहा है कि शो स्पीकिंग यूजर्स ओनली, लाइक जब कोई बोलेगा हाँ, तभी दिखेगा फिर गायब हो जाता है। हाँ वो सही है। अच्छा हाँ वो भी क्योंकि इससे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ और तो कुछ नहीं आ रहा। एक मिनट, टेस्टिंग 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 ओके। ये हाँ तो भी कुछ बोलो। हेलो हेलो हेलो। ठीक है, 2 यूज़र ट्राई मारने थे एक्चुअली। लेकिन रुक, जैसे पढ़ा रहा है मैं सेटिंग्स कर रहा हूँ। ओके ये भी हो गया अपना। अब okay. Testing, okay. सभी का इंडिविजुअल क्यों नहीं है संकेत सेटिंग्स? क्या मतलब? मतलब देख सभी का एक जैसा ही सेट, इसमें कुछ जैसे वॉइस विजेट में चेंज कर रहा हूँ तो चैट विजेट में भी वो चेंज हो रहा है।
चैट की ज़रूरत ही क्या है? हाँ बस वो प्रफुल है ना भाई इसलिए। हाँ तो वो TTS यूज़ करेगा ना। मैंने वैसे अबे कभी TTS आनेंगे येड़े। मैंने कभी वैसे यूज़ नहीं किया चैट विजेट, तो मुझे इतना नहीं पता। अबे सारा यहाँ चेंज कर रहा हूँ तो वहाँ भी हो रहा है। टेस्टिंग 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 टेस्टिंग। हाँ बट अरे यार वहाँ भी चेंज हो जाए सारा। एक में कर रहा तो तीनों में हो रहा है ऐसा, मतलब स्टेटस चैट और वॉइस तीनों विजेट में। हाँ ऐसा थोड़ी चाहिए था मुझे। सर क्या बनाया ले लग फालतू। टेस्टिंग बट ओह सॉरी, अब तेरे को मूव करता मैं अदर गेम्स में। अदर वाला है ओके। अब ये विजेट काम कर रहा है वैसे, बट अच्छा काम कर रहा है। बट सभी के लिए अलग से करना पड़ेगा मुझे, मतलब सॉरी, मतलब हमेशा मुझे लिंक जनरेट करना पड़ेगा। हाँ ओके क्योंकि जैसे अभी अदर गेम्स का वॉइस चैनल है, वहाँ पर ये विजेट देख। मतलब फिर ये लिंक ओके नाइस नाइस क्या बेकार है। हाँ हाँ हर बार थोड़ी करता बैठूंगा मैं। हाँ करना पड़ेगा। बाप का नौकर समझ रखा है यार। अदर गेम्स OBS। हाँ 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 दिमाग खराब हो रहा है साला ये। काश इंडिविजुअल सेटिंग्स होना चाहिए था रे सभी का, लेकिन ऐसे एक एक तो नहीं मज़ा आता। एक में कर रहा हूँ दूसरा में भी हो जा रहा है, बताओ फालतू चीज़ ये तो। हाँ अभी क्या ही करें। कह रहे राघव क्या इधर क्या कब से आके बैठा है भाई? Yo, what's up? क्या कर रहा है इधर आके? What? क्या कर रहा है? I mean, I'm just playing the game. ओह अच्छा। तो Yeah. अभी मैं दूसरे VC का, मैं तुम दोनों को मूव करता है ऊपर, एक मिनट। तुझे भी करता मूव। ओके अब इस VC का चेक करता। कुछ बोलता संकेत? हेलो। Yeah, what's up? हाँ ओके तीनों का सही आ रहा है। हाँ ठीक है। अब कुछ भी होगा ना अदर गेम्स में ही आएंगे। Other games? हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं। अभी संकेत क्या करने का इसको, एक नया ऐड करने का। हाँ ब्राउज़र सोर्स, उसमें वो लिंक। ब्राउजर सोर्स ओके समझ गया। URL में ये पेस्ट कर देना है क्या इसका? हाँ अपन पेस्ट कर दिए। और यहाँ और एक भी दिखा था कुछ। विथ रखो 312, हाइट रखो 600। ओके ये VC की क्वालिटी कम है क्या? क्यों मतलब क्या? ऐसे ये VC में आने के बाद क्वालिटी कम हो गई जैसे वॉइस की तेरी। क्या कर तू यार, छेड़छाड़ करता रहता है। मैं कुछ नहीं किया। Do you guys want to play the game or not? No, I'm व्हाट गेम streaming. भाई? I mean, you know what game I play. कौन सा खेल रहा है? मैं देख नहीं रहा अभी एक्चुअली कुछ भी। Like, what's the game we play all the time? मैं ड्रॉप करता, मैं अलग स्ट्रीम कर रहा। ओ हाँ सॉरी हाँ, चल बाय बाय संकेत। बाय। Okay, I think this will work.
can also have frame width. That I can use with index. It will just be the height. Because we will always work in square sprites, so I think I can safely do this. Sorry, index. Oh, okay, sorry, my bad. I should be changing source bound and not destination. Okay, yeah, it is working, so I will change this to 0.16. Wait. What? I don't get it. Why is it stuck at that? Why does this still look a little blurry? Should I increase this resolution? Okay, now it's clean, but why is it stuck? I don't see anything wrong with this. Am I missing something obvious or what?
Wait, what? What? Why am I not saying this? Oh, got it. Sorry, my bad. Okay, 0. Yeah, that's correct. 0 1 2 0 1 2 0 1 2. That's 3 frames. Zero 32 64. Yeah, that also looks correct because it's 9632. Okay, I'll be back. Okay, I'm back. Okay, so I think it's okay. It cannot be clear background issue, or is it? Yeah, it is. Yeah, nice. Nice.
Okay, now how do I make a car in Box 2D? Okay, that's going to be a challenge. So I have not used Box 2D before, so yeah, I don't know what I'll do. Okay, let's commit this changes and then come back to that. Render basic car sprite. It looks good, but it's going to be tricky. I haven't made something like this before. Okay, so do we have this sample? This also have samples. Okay, this is the car one. Okay, it's very small. Okay, it's just a header file samples. Okay. Okay, now it's not that big. I think this is something I can do. Okay, we don't need springs.
there it is. Okay. I specifically want the car one. Okay, then also this one. Oh, this pauses this thing. Oh, there's this weird collision. And here also we have a weird collision. That's good. You know what? This entire thing could be my map. Even the diagonals are working. Okay, now. Okay, nice. I want that car thingy. Pinball. Can you start again? Okay, that's pretty good. Okay. So this is what possible. These are the things that are possible. Platformer. Driving. Okay, nice car. Okay, I like this. Oh my god. Dude. This is going to be my map. Oh. Oh. God. What is that red? Stuff. Is it speed? Dude, why is this so good? Alright. Yeah, this card is very good. I will probably use this one. What? Okay. Which one was this?
driving. Then there is wheel. Okay, let's check out the driving code. Wait, there is no such thing as driving. What? Okay, I think I got it. Just a minute, I'm checking my internet speed. Also, I have only 1 hour left until my next stream. Okay, it's not good. Okay, it's fine. So there is camera and all. We have ground. We are creating a body. Create a body in this world. And then 25 points. Okay, I don't think... Maybe these are the 25 points they are talking about. How... Arrows is not panning. I'm not able to pan. Control arrows. That is also not doing anything. Oh, okay. Wait. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so this is one joint. Okay, nice. I like it. And then okay, that we are just making this. That's also, so this complete thing is a map editor. Is it our car? Make box. Create polygon shape. That's our shape definition. That's our box.
So there is a box. There are pivots, joints. So I don't think it's that thing. Oh, is it this? Yeah, I think this box is that. Then there is bridge. There are boxes. I saw the boxes. And yeah, now we have the car. We are just gonna spawn the car. Okay. So, and there are also things like scale, hertz, damping ratio, torque. Those are the things I'm not sure of. Okay, these vertices, 6 of them. One, two, three, 4, 5, 6. That's this. And it's very local coordinate. And then we are scaling it. Compute hull. Then we are making a polygon using that hull shape, giving it some density, friction, and then we are making a circle with the same scale. Okay, let's try making something with box 30 in gameplay itself. Okay, I'm not sure how it will look like still. I might not even be able to visualize it. Okay, let's see. And am I supposed to do it multiple times or just... I think I drew it... I make the world only once. And then... I think we work with the world ID. So it should be part of this init. Yeah, so I think
This is descriptor for the world, gravity and stuff. And then we create the world. I think we will also start storing it here. I don't think we need world definition, but we do need world ID or just world. Okay, we have the world. Then we need a ground. Okay, let's call this world ID. Okay, I'm a little sleepy right now. I also have a stream at 7:30. Okay, so we have ground body. What is this? Ground polygon. I think I'll have to store all of these IDs so that I can render texture for all of these. Okay, I will just follow this for now and try to make it work.
Oh, so when you attach a shape, the shape's coordinates become local to the body. Okay. So that's why those coordinates were local and they did not require any model view stuff. Okay, let's create a dynamic body. I think I should be able to read the position and width and all after this, so that I can render texture or shape, whatever you call it. Okay, we can call it shape. I just want something before I start designing myself. Okay, this would be this. Okay, I don't want that. Maybe if this dynamic box is our car, then this is good. Else I don't want any dynamic stuff. The dynamic body should have at least one shape with non-zero density. Otherwise you will get strange behavior. Yeah, I will have to go through all of this. Maybe I'll do it off stream, because it will take a while for me to do everything from this to understand and stuff. Okay, we already have our own time, so I don't think we need time step. And if I'm not wrong, time step is just get time. Okay, I don't understand the time step and step count just yet. This looked like frame FPS. And this okay, let's go with 4. I don't mind it, and let's go with 60. That is also fine. If we are defining this just once, then it's good. Okay, so this is how we simulate stuff, and we get the position. Okay, nice. So let's see, in draw I will put this here, and also let's bring these guys here, because I don't think they are incrementing. Yeah, it's constant. So, and if it is constant, then I think this is delta and not time step. Yep. So this is get frame time. Yeah, we can call, yeah, we can keep that sub step to 4. Okay. But okay. Yeah. Okay, then body ID.
So this guy, gameplay.body idea. Yeah, we'll come back to this when we design our own map and stuff, our own boxes. Gameplay, and yeah, let's print these. Okay, and then similar to position, I think I should also receive, there should also be width and height stuff. Bound? No. What? Okay, hold on. Get. Wait, do we not have width, height stuff? Or is it get mass data? Wait. No, this is mass, center, and rotational inertia. Wait, do we not have width and stuff in this? Okay, I'll check it out later. Yeah, let's check if we are getting any results on this. Okay, nice. So we are getting something. Okay, but without the width and height stuff, I still cannot render stuff. There has to be something. Get no. Okay, this can be useful. No, get mass is not it. Get shapes. No. Get transform, maybe that have something. It's okay, position and rotation, no. It still does not have width and height. So what is it? Okay, I don't think we can get width and height then. I might be wrong. Wait, dimensions. Okay, what is it? Or maybe instead of doing this, I'll have, yeah, these are the height and stuff. Okay, this position was normal position, local position, right? Wait. Okay, I'm not sure about that, but okay, we have something. I think I cannot.
instead of working this out for rendering, I will rather create my own shape and then also render it and then also try to simulate it. So yeah, let's try that. Let's have a ground. We already have a ground and our ground box is 5010 and ground position is 0 and -10. I don't understand this -10 stuff. Are we? Yeah, we are measuring it from the center. That means I will need translations. Okay, what do I do? I think that's why I need that dimension stuff. The main difference beside dimensions is that I must establish the dynamic body's mass proportion. Hi Nilaksh. Dekhaya Spider-Man with my friends. Oh nice. How was it? कैसी थी? This is what? बहुत बढ़िया. Nice. सही है. मैं कल जा रहा. कल 4 बजे देखने. Nice. Yeah. What is the game about? It's like hill climb racing. वो तो खेली होगी. तो मतलब इसका जो थीम है वो स्लीप है. तो हिल क्लाइंब रेसिंग वाली ही समझ लो. बट तुम्हारी कार में कोई बच्चा सो रहा है एंड तुम्हें मतलब इस वे में ड्राइव करते जाना है कि बच्चा जग ना जाए. बस वही है. मतलब इस टाइप की कार समझ लो. और इसमें तुम्हें बस बच्चे को जगने नहीं देना है. जितना ज़्यादा शेकिंग होगी
उतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस। ये तो ये मैंने नहीं बनाया, ये बॉक्स स्टोरी जो फिज़िक्स इंजन है उसका एग्ज़ाम्पल है, बट मैं बस रेफ़र कर रहा। बढ़िया है गेम। हाँ देखते अब बन पाता है कि नहीं, वो नहीं पता, विल सी। ये मतलब वो जो था वो मैंने नहीं बनाया था, ये कार है, ये मैंने बनाई वैसे। ड्रॉ की। अब इसमें वो मतलब फ़िज़िक्स इंजन एंड रेंडरिंग इंजन वो दोनों अलग अलग हैं, तो अब मुझे उनके बीच में थोड़ा, और वो दोनों अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करता है, तो थोड़ा कम्युनिकेशन खुद से लिखना पड़ेगा मैथमेटिक्स यूज़ करके कि तुम सही से ट्रांसलेट कर दो कोऑर्डिनेट्स एंड ऑल। तो देखते हैं। मतलब आई थिंक मुझे वो मैथमेटिक्स ऑफ स्ट्रीम ही करना पड़ेगा क्योंकि मैं नोटबुक में करूँगा वो, क्योंकि इसमें मैं फोकस नहीं कर पाऊँगा। Bye, all the best for the games. Yeah, thank you. Bye. Okay. This is 50 and 10. World box size or dimensions. I'm mixing up camel case and snake case in this one. I don't like it. Okay, let's try to render this world box. Sorry, ground box. So draw a rectangle.
Yeah, let's keep it here. Draw rectangle and keep it light. Light color. This would be gameplay.box dimension.x. This is the dimension and not the position, right? Make box. Half width and half height. Okay, so it will create something in center. Okay, so yeah, I will do the mathematics. So ground position will be so we need the center of my screen first, and that will be okay. I'll create one global. Screen center X, screen center Y, okay, now that's the center. So rectangle will be center vector. So center vector we can do not length, not square, move towards, no, not multiply, not negate. Okay, yeah, we can do this. And yeah, it will return a new vector. That's good. So it will be this, I guess. This will be our top left.
this will be my ground position, and we already know the dimensions. So this, 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 okay, let's see. This should draw my world. So not world, but rather ground. And we should remove this print tab. Okay, it's not drawing anything. Yeah, this should be working, but it's not. Let's also print this. Okay, these are floats. Okay, I got it. It's not the screen width that we want. It's the viewport size. Where is my viewport? Okay. Okay, now wait. Okay. Okay, nice. We have a ground. Now, similarly, we should be able to get the box. This is ground box, and our body is this. Dynamic box is this. And actually, no, yeah, got it. We are actually reading the values from body ID. So this is what we want to render.
We have six more minutes, and then I will end this stream. And player box dimensions are this is the position, and I think 2.0 2.0 is the size of the box. Okay, now let's do something similar but for okay, nice. Yeah, this should do it. Let's see. Okay, I need okay, this is not going to be the same position. Oh god. Okay, 3 more minutes. Okay, it should not be center vector then. Okay. I saw
something. Okay, wait. I think I should... This position should be from the world. Okay, nah. Yeah, we'll see. Maybe there is something that already exists, or we will have to do something about this. But for now, let's just manually do this, just to check. Okay, I think maybe 100 was too big. 10. Okay, it was something. Yeah, I'll come back to this after the community stream. We'll see you in the see you in the next see you in that stream. Okay, bye. Thanks for joining.